So now what is the characteristics of our IoT things? Here the following characteristics we are talking about here. Okay then, so what is the first characteristic? Connectivity is an important requirement of IoT infrastructure. Definitely connectivity is an important. Things of a IoT should be connected to a IoT infrastructure, whatever the physical devices we are talking about here, which comes under the things of IoT, that should be properly connected to the IoT infrastructure. Anyone, anywhere, anytime, connectivity should be granted at all the time. Without connection, nothing makes sense. So definitely, first characteristic or the first need is that you need a connectivity, right? Then the intelligence and the identity. Another characteristic we are talking about the intelligence and the identity. What comes under the intelligence? As we had talked about the example of a big data, the data lake has been generated within a few seconds. So somewhere business intelligence or the mobile intelligence should be there. Identity should be there. Which data is relevant and which data is not relevant. Data cleaning should be there. Data before the data transporting, right? So the extraction of a knowledge from the generated data is very important. So another characteristics is the extraction of a knowledge. क्योंकि बार बार आप एक ही लिंक पे कभी बहुत बार क्लिक भी करते हो, वो बार बार आपका डेटा जनरेट होता है, तो डुप्लीकेसी ना हो डेटा के अंदर, रिडंडेंसी ना हो डेटा के अंदर, डेटा क्लीन हो प्रॉपर, राइट, एरर ना हो डेटा में, एम्बिग्यूटी ना हो डेटा में. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ अ नॉलेज और उसके बाद प्रॉपर इंटेलिजेंस परफॉर्म करके एनालाइज परफॉर्म करके उसमें से प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल रही हो जिसके लिए आप डेटा जनरेट कर रहे हैं इंटरनेट से. So the extraction of a knowledge from a generated data is very important. For example, a sensor generates a data, but the data will only be useful if it is interpreted properly, right? Each IoT device have a unique identity. Obviously, आप अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, कोई दूसरे अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, तो आपका एक डिवाइस है, किसी दूसरे का डिवाइस है, तो हर किसी के हर एक डिवाइस की, हर एक मोबाइल की यूनिक आइडेंटिटी है, जिसके बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने का रास्ता गूगल मैप से सर्च कर रहे हैं. दिस आइडेंटिफिकेशन इज हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द इक्विपमेंट एंड एट द टाइम्स फॉर क्वेरिंग इट्स स्टेटस आल्सो, राइट, व्हेन यू डिस्कस अबाउट द करंट लोकेशन. तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक जितना समझाया मैंने? नो मैम. यस, सबको ठीक है, आ रही है सबको आवाज? बीच में मैं चेक कर रही हूँ, ऐसा ना कि मैं बोलती रहूँ और आपको आवाज ही ना आ रही हो. Then third characteristic we are talking about the enormous and the scalability. अब scalability क्या होता है? क्या कोई explain करेगा? Scalability का मतलब क्या होता है? Enormous scalability को छोड़ के सिर्फ scalability बताओ तो क्या होता है scalability का मतलब? मैम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में देखा जाए तो स्केलेबिलिटी का मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो जब यूजर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर इस वे में डेवलप करे कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को यूज करके नए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आसान, मींस नया रिक्वायरमेंट इजी से फुलफिल हो जाए विदाउट कोड में पुराने को, मतलब पुराने कोड को चेंज किए बिना कोड इस कैपेबल हो. राइट, सही, ठीक है. स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि किस एक्सटेंट तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकते हो फ्यूचर में और विदाउट सॉफ्टवेयर को या विदाउट डिवाइसेस को और नेटवर्क को चेंज किए बिना. यहाँ पर हम बात करें सो सबसे पहले बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, तो स्केलेबिलिटी तो इशू होना ही नहीं चाहिए आपका. सो एनालिसिस स्केलेबिलिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स connected to a IoT zone is increasing day by day when we are talking about the different elements. Hence, IoT setup should be capable of handling the massive expansion. कि further future में इसको सिंपली ये समझो कि रोड में ट्रैफिक है तो उसको वो मैनेज करने के लिए होना चाहिए, राइट. इसी तरीके से नेटवर्क में ट्रैफिक आता है या कुछ कैपेबिलिटी एक्सटेंड करने की बारी आती है तो मैसिव एक्सपेंशन पॉसिबल हो, वो पर्टिकुलर IoT जोन में पर्टिकुलर आपका वो एक्सपेंशन हैंडल करने के लिए वो कैपेबल हो. The data generated as an outcome is enormous. Obviously, again, here we are talking about the big data. It should be handled appropriately, right? अब अगर डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ट्रैफिक आ गया है नेटवर्क में, तो वो प्रॉपरली हैंडल करा जाए. तो स्केलेबिलिटी शुड बी देयर बिकॉज इंटरनेट आ रहा है तो बिग डेटा आ रहा है, डेटा बहुत एनॉर्मसली ही जनरेट हो रहा है. Further,
fourth characteristic we are talking about here, the dynamic and the self-adapting complexity. Definitely dynamic should be there, बीच में human interface तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर कि बार बार human को interface करना पड़ रहा है dynamically. So IoT device should dynamically adapt themselves to the changing extent and the scenario. ये थर्ड वाले पॉइंट से ही इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं आप, ठीक है. स्केलेबिलिटी होना चाहिए. Assume a camera made for the surveillance. It should be adaptable to work in different conditions and different light situations, morning, afternoon and night. Like brightness उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ा ले, नाइट में उसे ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, मॉर्निंग में कम चाहिए. तो ये सब कैमरे के एग्जाम्पल भी है, राइट. सो डायनेमिक एंड द सेल्फ अडेप्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो दैट शुड बी देयर. Then the architecture is the another characteristics. IoT architecture cannot be homogeneous in nature. अब homogeneous होता है मतलब कि एक जैसा, heterogeneous होता है अलग अलग तरीके से. So architecture cannot be homogeneous in nature, a collection of a same kind of a data we say here. It should be hybrid. Change होता है कभी कुछ, supporting different manufacturers products to function in a IoT network. Right? So अगर जब हम पर्टिकुलर IoT आर्किटेक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए कोई अलग आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, राइट, और फर्दर किसी डिफरेंट एप्लीकेशन के अलग हो रहा है सेफ्टी इश्यूज के लिए. So it should be it cannot be homogeneous in nature. It should be hybrid, supporting different manufacturing products to function in an IoT network. So according to me, again here we are talking about the extensibility or the scalability. IoT is not owned by any one engineering branch. IoT is reality when multiple domains come together, right? So another characteristics we are talking about here, the safety now. Now safety तो होना ही चाहिए because जब इंटरनेट है तो ambiguity है, तो आपका बीच में डेटा सिक्योर नहीं भी हो सकता. So this is a danger of a sensitive personal details of a user getting compromised when all her devices are connected to internet. तो आपका डेटा आपके वाईफाई से लिया जा सकता है, राइट. सो दिस कैन कॉज अ लॉस टू अ यूजर. उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स आप अपने लैपटॉप से अपने वाईफाई को यूज करके जो भी आप अकाउंट्स ओपन कर रहे हो वो सब फैच किए जा सकते हैं. सो दिस कैन, उसे हैक किया जा सकता है बीच में नेटवर्क में. So safety should be the another characteristics and which is a very important characteristics when we are talking about the Internet of Things. The device आपको इतना secure होना चाहिए. अब वही बात आप आईफोन लेते हैं और नॉर्मल एंड्रॉइड फोन लेते हैं तो उसमें आपका सेफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है. दिस कैन कॉज अ लॉस टू अ यूजर, हेंस डेटा सिक्योरिटी इज अ मेजर चैलेंज. अब जब इंटरनेट आ गया, जब IoT आ गया, बहुत सारा डेटा जनरेट हो गया, तो डेटा सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, ठीक है. सो बिसाइड द इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड इज ह्यूज. IoT नेटवर्क्स में आल्सो भी एट द रिस्क, तो नेटवर्क भी हैक हो जाता है. देयरफॉर इक्विपमेंट सेफ्टी इज आल्सो क्रिटिकल हियर. सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी. Now the naming and the addresses is the another characteristic. So what we are talking about, here we are talking about our example here, right? So अगर आप characteristic की proper बात करें तो first we are talking about the intelligence, then the connectivity, then the dynamic nature, right? Then the enumber scale, the scalability, then the sensing, then the heterogeneity we are talking about here, the homogeneous should be not, then the security, then the naming and the ethics. So यहाँ पर एक एक करके characteristics की definitions आप कैसे बोलेंगे. Intelligence, IoT comes with the combination of algorithms and the computation. So here we are talking about again, जब एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तो क्या एल्गोरिथम यूज किया जा रहा है, क्या कंप्यूटिंग टेक्निक यूज की जा रही है यूजर नेम और पासवर्ड को मैच कराने के लिए, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट. So intelligence, proper intelligence we are talking about here. So IoT comes with the combination of algorithms and the computation, software and the hardware that make it smart. So ambient intelligence in IoT enhance its capability, which facilitate the things to respond in an intelligent way to particular situation and support them in carrying out a specific task. So ये characteristics हम already discuss कर चुके हैं ऊपर, ठीक है. So आपको जब मैं नोट शेयर करूँगी तो इसे एक बार रीड आउट कर लेना कैसे कैसे डायनेमिक नेचर की फॉर्म में आपको IoT शो करना है,
डायनेमिक नेचर की अगर बात करें, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ इंटरनेट ऑफ अ थिंग इज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली सबसे पहले तो अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करना, देन उसको ह्यूज डेटा को स्टोर करना, देन स्टोर करने के बाद उस डेटा में अपडेशंस करना, फैच करना, मीनिंगफुल डेटा फैच करना, ये सारे काम हमारे बढ़ जाते हैं। सो primary activity of the internet of a thing is to collect the data from its environment. This is achieved with the dynamic changes that take place around the devices, right? So जो ये सब आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कलेक्ट करना, क्लीन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब आपका डिवाइसेस के थ्रू ही होगा। द स्टेट ऑफ दीज डिवाइसेस चेंज डायनेमिकली, ठीक है, कभी स्लीपिंग वेव में होती है, कभी वेकअप होती है, कनेक्टेड होती है, कभी डिस्कनेक्ट होती है। आप अपने सिस्टम में भी लैपटॉप अपडेट लगाकर छोड़ देते हो, कभी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसमें बैकअप आप लगाकर छोड़ देते हो कि रोज रात को 12 बजे जब आप नहीं हो, आपके फोन आप वर्किंग भी नहीं हो, तो उसमें आपका बैकअप जनरेट होता रहता है। सो this state of these devices change dynamically. Example, sleeping and the waking up, connected or disconnected, as well as the context of a devices including temperature, location and the speed, right? आपका बार बार कनेक्शन, लोकेशन और स्पीड चेंज होता रहता है। इन एडिशन टू द स्टेट ऑफ डिवाइसेस, द नंबर ऑफ डिवाइसेस आल्सो चेंज डायनेमिकली विद द पर्सन, प्लेस एंड द टाइम। अब वाईफाई से एक डिवाइस कनेक्टेड है या 2 3 4 कितने भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो डायनेमिक नेचर इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ इंटरनेट ऑफ अ थिंग्स, राइट? कनेक्टिविटी की बात करें तो आपके डिफरेंट वेज में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, राइट? एमरस स्केल की बात करें, द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट नीड टू बी मैनेज्ड एंड दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर विल बी much larger than the devices connected to a current internet. So when we are talking about the communication, then when we are talking about आपसे मैं connect कर रही हूँ तो number of students can be there, right? So number of devices that need to be managed and that communicate with each other will be much larger than the devices connected to a current internet. The management of a data generated from these devices and their interpretation for application purpose becomes more critical. ठीक है, तो यहाँ पर बिग डेटा में और जब आगे इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पीछे 4 साल में एकदम से ट्रिपल डेटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत कुछ ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइसेस भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो एनॉर्मस स्केल स्केलेबिलिटी शुड बी देयर। सो गार्टनर जो है उन्होंने हमें क्या बताया इन 2015 में, कंफर्म स्टेट द एनॉर्मस स्केल ऑफ IoT in the estimated report, where it stated that 5.5 million new things will be get connected every day. Again, I am talking about here the big data. And the 6.4 billion connected things will be in a use worldwide in a 2016, which is up by 30% from 2015. 2015 से 2016 में 30% का इंक्रीमेंट हो गया। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो फोरकास्ट, जब पहले की बात करें हिस्ट्री में, तो फोरकास्ट किया गया दैट द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस विल बी रीच टू 20.8 बिलियन बाय 2020। अभी क्या चल रहा है 2025, तो इसका भी 30% आप हर ईयर इंक्रीज करेंगे तो आपका यहाँ पर the devices are increasing day by day. So enormous scalability is another issue or the challenge or the characteristic should be in a IoT. Now the sensing, we had discussed already, sensing also IoT wouldn't be possible without the sensors. Obviously जब तक location generate नहीं होगी, right? So IoT wouldn't be possible without the sensors, which will detect or measure any changes in the environment to generate a data that can report on their status or even interact with the environment. So sensing technologies provide the means to create capabilities that reflect a true awareness of a physical world and the people in it. So sensors are important. The sensing information is simply the analog input from the physical world, but can be provide the rich understanding of a complex world. So again, सेंसर्स के थ्रू ही डेटा चेंज की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। हेट्रोजेनिटी वी हैव डिस्कस्ड कि हर एक एप्लीकेशन में डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं। सो हेट्रोजेनिटी इन द इंटरनेट थिंग्स इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। Devices in IoT are based on different hardware platforms. For what purpose we are talking about here?
and the network and the interact with other devices or the service platform. अब यहाँ पर कुछ सर्वर हो सकता है, कोई सिंपल सा छोटा सा कनेक्शन हो सकता है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट है. So the different networks. So IoT architecture should support direct network connectivity between the heterogeneous networks, जिससे कि fast delivery of a data हो पाए. The key design requirements for the heterogeneous things and their environment are the scalability. Again, requirement तो scalability है क्योंकि devices बढ़ती जाएंगी. Modularity, एक particular modular structure follow किया जाएगा common functionality के लिए, जिसे easily further extensible extend किया जाएगा. Extensibility is the another requirement, and the interoperability is the another requirement, right? Then the security, again error security threats तो बहुत ही ज्यादा आपके possible हो जाते हैं when the data is basically transferring over the internet. So IoT devices are naturally vulnerable to the security threats. As we gain efficiencies, novel experience, and the other benefits from the IoT, it would be a mistake to forget about the security concerns associated with it. So different wide variety of a technology, or we are saying that the firewall, different the trans firewall and the interconnected firewall, analytics inter-trans firewall or the intra-trans firewall connectivity concept we will talk about here in the security. So there are a wide variety of technologies that are associated with the Internet of Things that facilitate in its successful functionality. So IoT technologies possess the above mentioned characteristics which create value and support human activities. They further enhance the capability of IoT network by mutual cooperation and becoming the part of a total system, which is a need of a system, which is a need of the internet.